next chapter, uh, in which we have to study about the traditional costing and Kaizen technique. Now, we have already studied about the activity-based costing technique, then traditional costing technique. Then we have seen about the product life cycle costing technique. Then we have seen about lean accounting or lean manufacturing, that also we had studied. So various costing techniques we had studied under strategic cost management, right? Then we have seen strategic cost management in case of various sectors. In this unit, we have studied about the 6 sectors in which how we are going to make the strategic cost management. Now, last unit is regarding to target costing and Kaizen costing. Now, target costing and Kaizen costing, what we have to study. So, this is the last unit from our syllabus. In target costing, we have to see about the introduction, key principles of target costing, why it is implemented, then how it is implemented, that is methodology and procedures, then what are the advantages and how the implementation can be done. So this is about the target costing that we have to study. Then Kaizen costing. Kaizen is the Japanese technique which is used in the Japanese organization. That is Kaizen costing, in which meanings, concept, process, procedure of implementation, evaluation, benefits, challenges, and standards. Then target costing versus Kaizen costing, similarities and differences that we have to study under this last unit. This is very small unit. It will finish within 2 to 3 lectures maximum. Now see, let us about the target costing. Target costing, and we have seen the traditional costing. We have already studied the traditional costing, Kaizen, traditional costing, activity-based costing, value chain analysis, then value added. So these are the various techniques of costing we have already studied. Now, target costing means what the name itself suggests. At here, we have to set the target for the costing. Okay. So target costing means what? It is a structured approach in determining the cost at which the proposed product with specified functionality and quality must be produced to generate desired level of profitability and its anticipated selling price. So this is the definition of target costing, in which what is we are going to do. We are proposing, means what, it is a kind of implementation. It is a kind of planning. So in target costing, first what we will do, we will prepare certain framework. We will prepare certain framework or certain procedures to reduce the cost and to propose the product. To manufacture the products, it is a kind of your planning. It is the structure, means what, the format is already fixed, as well as whatever product manufacture, whatever product I wanted to manufacture, I will decide its a price in advance. Let us say Tata Nano must be produced within 1 lakh. Try to understand. So this is the structured product, and its cost is also predetermined. Its cost is also predetermined, means what, we will prepare, we will set the price of this product at rupees 1 lakh per unit. So if this is the selling price, then we have to decide the margin. So by making the investment of 1 lakh rupees in that particular product, what will be my margin? For example, 10%. If 10% is my margin that I should have to achieve as a profit, then what will be its cost? So selling price 1 lakh minus margin of 10%, that is 10,000. So 1 lakh minus 10,000 is the 90,000 is the cost of that product. Getting this? So in target costing, which are the things we need to consider? First one is which product I wanted to manufacture. Do we have a structure? Do we have a cost identification? Then on the basis of that, we have to decide the price.
Yes, am I audible now, students? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, sorry. See, what we are doing, what we are studying in target costing, so it is different than traditional costing. Traditional costing में हम लोगों ने क्या देखा कि first we will do the expenses, then we will record the expenses, then we will bifurcate the expenses on the basis of direct cost and indirect cost. So direct cost, that is the cost of direct labor, direct expenses and direct material. Indirect cost means what? Cost of indirect labor, indirect material and indirect expenses. So indirect expenses जो होते हैं उसका allocation करते हैं, और direct expenses जो होते हैं directly allocation करते हैं. Getting this? So this was about traditional costing we have studied. Now target costing is what? Here what you have to do, here first you have to make the planning. You have to make the planning of manufacturing, how many units we are going to manufacture, then what will be its target cost, that is the cost is decided in advance. Then what will be the level of margin, level of profitability, that also you are deciding in advance, as well as how many units you are going to produce, that is also you are going to decide in advance, as well as its a quality of the product, what kind of quality of product you are going to manufacturing, that also you are setting the targets of various things. क्या क्या टारगेट आपने डिसाइड किया? पहला कॉस्ट का टारगेट, उसके बाद प्राइस का टारगेट, उसके बाद वॉल्यूम का टारगेट, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन का टारगेट, एज वेल एज सेलिंग प्राइस का टारगेट. ये सारे टारगेट्स वी हैव टू डिसाइड इन एडवांस बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन टारगेट कॉस्टिंग. तो ये टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग वेरियस टारगेट सेट करते हैं. किसके टारगेट्स? वॉल्यूम के टारगेट्स, प्रोडक्ट के फीचर्स के टारगेट, क्वालिटी के टारगेट्स, लाइफ टाइम का टारगेट, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट, कॉस्ट का टारगेट, सेलिंग प्राइस का टारगेट एंड वॉल्यूम का टारगेट. ये टारगेट हम लोग टारगेट कॉस्टिंग में सेट करते हैं. And this is in advance, and when we start actual production, at that time we will process or we will follow the entire structure whatever we have decided. Getting this? So this is about the target costing. So nowadays target costing is viewed as an integral part of design and introduction of new products. Whenever you wanted to start new product, whenever you wanted to make some innovations in the products, at that time you should not go by traditional way. Now if you set the target costing at that time, what will happen? You will do the manufacturing expenses, you will do the all kind of your activities as per predetermined plan. Predetermined plan means it is your target costing. You have decided the targets at every level. Okay, it is a part of overall profit management process rather than simply a tool for a cost for reduction and tool for cost reduction and cost management. It is the overall profit analysis, whether our company will be in profit or not. So to generate the profit or to generate the income, how many number of units you need to manufacture and how many number of units you need to sell into the market, what is its price, what will be its selling price, what will be its cost, you are deciding in advance. So it is overall, apart from cost reduction, it is the overall profit management. Now see, the target costing is one where the production cost of the product is decided first. Just we have discussed कि उसका production cost we will decide through the targets. तो ये product इतने में ही बनाना चाहिए. But we should not negotiate with the quality. We should not adjust with the quality. So here in target costing, we should decide the production cost in advance. Then all the elements of production and cost like design, production process, raw materials are selected to achieve the specific cost. So once we have decided the target of our cost, production cost, then on the basis of this, कौन से raw material किधर से लाना है, कितने पर यूनिट लेबर की कॉस्ट कितनी रहेगी, ओवरहेड कितना करेगा, उसके बाद कौन सा मशीनरी यूज करना है, कौन से प्रोसेस यूज करना है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है? These all things depends on my total production cost, because anyhow I have to
सेट विथ दिस मिनिमम कॉस्ट। जो कुछ मुझे खर्चा करना है, मुझे बजट इतना ही दिया है कॉस्टिंग का, 1 लाख का ही दिया है, 500,000 का ही दिया, 80,000 में मुझे सारे एक्सपेंसेस बिठाना ही पड़ेगा। दैट इज द टारगेट। Getting this? So here production cost target will be decided in advance, and looking towards this production cost target, I need to arrange all my resources. I need to arrange all my resources accordingly. Let us see, the Tata's dream project was rupees 1 lakh car. Okay, means one car Tata has been decided to launch within 1 lakh rupees. Is the most visible and transparent example of target costing. It was the example of target costing, and on the basis of this 1 lakh, they have launched the nano car. Okay, so on the basis of target costing, they have also decided the product. तो कौन सा प्रोडक्ट है वो 1 लाख में मेरा बैठेगा. So accordingly, they have adjusted all the resources like raw material, like labors, then inventories, so many things they have arranged as per the 1 lakh. जो कुछ हम लोग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसका लाइफ टाइम, वो सब कुछ उन्होंने उन्होंने वहां पे इन्वॉल्व किया, as well as how many cars they should produce in 1 year. They have also decided. So Tata Nano car is the best example of target costing. Getting this? So in target costing, targets are set in advance, and with respect to this decided target, we will do the expenses. Now, why we implement the target costing nowadays? What is the role or what is the importance of target cost? See, what happening due to the globalization, product life cycles are getting shorter and shorter. Getting this? Means what? If we take an example of, uh, Indica. Indica was launched in the year of 1996, and we have already studied the product life cycle. Product life cycle में 4 stages होते हैं, that is introduction, growth, maturity and decline. So the product life cycle of that Indica was more than 10 years. When Indica was launched in the year 1996, so Indica was running its production life cycle from 1996 to 2009-10. तक इतना demand था because the longer production cycle was there. But nowadays you can just imagine within 6 months company is launching new product, new model, because product life cycle is decreasing. अभी क्या है, due to competition in 1996 that much competition was not there in the market. So whatever company is going to manufacture, customer has to purchase it. Customer has not option. Getting this? But now due to competition, due to globalization, what happened? Competition is increased and customer is expecting more features products. And competitors are also delivering new product to stay into the market. Getting this? Now, target costing का जरूरी क्यों है nowadays? Because your product life cycle is becoming shorter and shorter. इसलिए क्या हो रहा है, तो quite often 1 or 2 years या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही उसका अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा होने से क्या हो जाएगा, मुझे आई हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट, और ये कॉस्ट रिडक्शन में मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. अगर मेरे पास में 1 साल का ही लाइफ साइकिल है कि कोई भी प्रोडक्ट का, तो मुझे पहले 6 महीने मुझे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे. ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज माय कॉस्ट विल बी हायर, और रिमेनिंग 6 मंथ में मुझे कॉस्ट रिडक्शन करके प्रॉफिट कमाना है. दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन स्टेज में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता है बिकॉज आई हैव टू बियर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस. ग्रोथ स्टेज में क्या है, मुझे प्रॉफिट कमाने का चांस है. मैच्योरिटी में मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और डिक्लाइन में भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो मुझे प्रॉफिट एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट द प्रॉफिट, वेयर इज द स्कोप?
there is the scope only at a growth stage. लेकिन अगर मेरा कंपनी का टोटल लाइफ साइकिल अगर 1 साल का है तो ग्रोथ स्टेज कितने दिन का रहेगा? अबाउट 5 to 6 months. Within that I have to earn the profit and it is very difficult to me because introduction stage में just imagine the product life cycle. You have introduction stage, there is no scope to generate the revenue. You have maturity stage where there is very little chance to generate the revenue, and you have decline stage where is also profit is also negligible. So in product life cycle you have only scope to generate the profit in the growth stage. Getting this? And in growth stage, if you wanted to generate the profit, means what? This growth stage should be of a number of months, more number of months, but it is not possible due to this competition and globalization. That's why whatever I need to manage, I need to manage within the life cycle only of the product. जो कुछ मुझे करना है, जो कुछ इनोवेशंस करना है, प्रोडक्शन लॉन्च करना है, वॉल्यूम डिसाइड करना है, प्राइस डिसाइड करना है, ये पर्टिकुलर ईयर में ही करना पड़ेगा. And nowadays what is happening, technology is changing day by day, so that competitors are launching new products again and again within 2 years, within 3 years. Okay, with 1 year product life there is very little scope for achieving the cost control. तो 1 साल का अगर लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, तो it is difficult to manage this cost within 1 year. That's why there is need of target costing. तो target costing में हम लोग क्या करेंगे? We will decide the life cycle of the product as well. ये मेरे लाइफ साइकिल सिर्फ 6 महीने का है, मेरा लाइफ साइकिल 2 साल का है, मेरा लाइफ साइकिल 1 साल का है. Within that, I need to manage growth, introduction, growth, maturity, and decline stages. And accordingly I need to manage, I need to set the volume of the product, I need to set the selling price of product, and I need to decide the cost of my production as well. Once the product is developed and designed, all the specifications and processes in place, there is limit to how much cost cutting companies can do in the manufacturing stage. So it is the post-mortem analysis of your expenses, it is the post-mortem analysis of your processes, that where is the scope to reduce this cost, and accordingly we will do this. Therefore cost management should start upfront at the initial stage to be effective. तो cost management हमने कहाँ से start करने चाहिए? At the initial stage से ही cost cutting का target decide करना चाहिए. So this is the importance of target costing, where what we will do, we will decide the target in advance before start of your manufacturing activity, and we will try to obey these targets. So if we try to obey this target, automatically at predetermined costing we will manufacture the product, so that our revenue will be fixed, our selling price will be fixed, everything we have decided, and accordingly we are obeying. That is the importance of target costing. And why there is need of target costing? Because product life cycle is becoming shorter and shorter. That's why whatever profit you wanted to earn, you have to earn this profit within stipulated time. You have to earn the profit within stipulated volume. Getting this? Because complex business situation is there, technology is changing every day, business competition is increasing day by day, and due to globalization there is entry of new competitors in the market. That's why as an organization we need to focus on target costing. Okay, so introduction to target costing कैसे होता है? This is the technique has been developed in the Japan. Target costing is this Japanese technique basically, and this aims at a profit planning. Profit का planning करने के लिए इसकी मदद होती है. Its device continuously control the cost. So here at every sector, at every production areas, at every areas of your factory, we are setting the targets and we are giving the targets, and everybody must follow this target. So it is the technique of controlling the cost
and managing the profit over product life cycle. Profit management strategy और cost cutting strategy ओवरऑल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये हेल्प करता है. टारगेट कॉस्टिंग इनिशिएट द कॉस्ट मैनेजमेंट एट द अर्लीस्ट स्टेज. देखा हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं टारगेट कॉस्टिंग में. एंड द टारगेट कॉस्टिंग इज अप्लाइज फॉर ओवरऑल और थ्रू आउट द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल. एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये टारगेट कॉस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. Now, how to decide the target cost? Target cost is equal to planned selling price minus required profit. Selling price कितना है और उसमें आपको कितना profit चाहिए. So remaining will be your target cost. So within that remaining target cost, you have to set entire your resources. You have to set entire your production plan. Target cost is becomes a residual or allowable sum. Target cost is your residual amount. Residual amount, because why? Your selling price is fixed, your profit level is fixed, then selling price minus profit is equal to your target cost. So this is the residual. First we decide that selling price. So how to decide the selling price? You need to understand the market, competitors price, and my price should be equal to my competitors price. So you have decided the selling price, you have decided the margin to be generated from this product. So selling price margin minus margin is equal to your target cost, and that anyhow you have to achieve. That's why it is called as a residual amount. If it is thought that product cannot generate the required profit, it will be not produced. Okay, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के करने के बाद मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, at that time I have to change the decision. Getting this? So that if I'm not generating the profit, then there is no meaning to do this kind of activities. That's why in target costing हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, जो प्रोडक्ट मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट नहीं देता है वो प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं करना चाहिए. I should not waste my activities, I should not waste my efforts. Getting this? So it will not be produced such as an aspect of product would be redesigned. अगर नहीं मुझे प्रॉफिट जनरेट होता है तो मुझे सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, मुझे उसका प्रोडक्ट का, उसी प्रोडक्ट का कुछ तो कॉस्ट रिडक्शन करके उसका डिजाइन चेंज करना पड़ेगा. सो दैट आई विल सेट माई टारगेट, आई विल मेट विथ माई टारगेट. तो अगर वो एक प्रोडक्शन में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता है, डिसाइडेड प्रॉफिट नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करूंगा. मैं I will make the changes in the design of product. That is in my hand, and that is the principle of target costing. किसी भी हालत में मुझे मेरा प्रॉफिट का टारगेट अचीव होना ही चाहिए. Okay, value engineering and value analysis may be used to identify innovative and cost effective product features. हम लोगों ने value engineering and value analysis we have studied in first unit. So these techniques, costing techniques, value engineering and value analysis technique will be used to generate the effective product features in the planning and concept stage. प्रोडक्ट का प्लानिंग, टारगेट कॉस्टिंग का प्रोडक्ट का प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टूल्स यूज करेंगे. Now let us see the what are the steps involved in the target costing. So first step is there are 5 to 6 steps. 6 steps are there. To implement this target costing in the industry, we have to go by these steps. So first step is the customer product design specification. What we are doing, the product which wanted to design or the product we wanted to sell into the market, uska design specification karna pehla activity hai. Which product that should be sell into the market, कौन सा product market में sell हो सकता है, उसका design बनाना, उसका डिजाइन बनाना, उसका स्पेसिफिकेशन बनाना, ये टारगेट कॉस्टिंग का पहला एक्टिविटी है, पहली स्टेप है. The customer requirements as to the
functionality and quality of product is the prime of importance. So what customer expects into the market, what competitors are selling into the market, and what is the expectations, what are the expectations of the customers from the market. By understanding these expectations, by understanding the gap between customers expectations and competitors product, अभी कस्टमर क्या चाहता है और अभी कॉम्पिटिटर क्या डिलीवर करता है, तो ये दोनों में से गैप फाइंड आउट करके मुझे मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना पड़ेगा, so that customer will accept my product. Okay, so design and specification of your product and design of your product, it is the first step in target cost. Now this design specification of new product is based on customer taste, customer expectations and customer requirement. Customer का टेस्ट क्या है, customer के expectations क्या है, customer की need क्या है, whether can I satisfy these taste, expectations and requirements through my product, and accordingly you need to design your product. The design product should satisfy the taste, expectations and the requirements of the customers. The competitors products and the need to have extra features over competitors products are also considered. Here क्या मुझे करना पड़ता है, here I need to study my competitors product as well. I need to study the features of my competitors products so that I can deliver, I can set some extra benefit into my product. मुझे मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसके प्रोडक्ट्स के लिमिटेशंस क्या है, ये जानना पड़ेगा. एंड by understanding these limitations lacunas of my competitors product, I need to identify gap, and to fulfill this gap I have to design my new product. So this is the first step, that is the customer product design specification that I have to design. टाटा नैनो जब लॉन्च हुआ तो टाटा ने आइडेंटिफिकेशन किया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे, let us say an Indica was there, then Desire was there, Swift was there. Okay, after that there were some of the Innovas and so many products. तो कस्टमर को की नीड क्या है, कम से कम दाम में उसको फोर व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर के प्राइस में फोर व्हीलर चाहती थी कस्टमर. Getting this, that was the need of the customers. So everybody was not affording to purchase the price to purchase the car of 6 lakh rupees or 7 lakh rupees. आम आदमी ने का भी कार खरीद करना सपना पूरा होना चाहिए, that was the expectations. इसलिए उन्होंने क्या किया, they have designed unique features products जो कि कम से कम कीमत में आम आदमी को भी अफोर्ड हो जाएगा. That was the target decided. Okay, so that in this way we can design the product specification. तो आम आदमी की स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको एक्सपेक्टेशंस क्या है. Getting this, by understanding the expectations, company can design the product features and product specification. So this was the first step. Second is that market target selling price. अगर ये product बनाया तो actual what is the economy level, and accordingly to this economy level we will decide the selling price first. डिजाइन बनाने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, that I will decide. The target selling price is determined using various sales forecasting techniques. So by using a dealer's interview, customers interview, उसके बाद competitors interview, by taking so many interviews, by taking feedbacks from so many stakeholders of the business, I will forecast my sale. I will forecast my selling price. The price is influenced by the offers of competitors, product utility, prices, volumes and product. तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा. Now this whatever selling price I will be deciding, this will be my target selling price. Means what, anyhow I need to sell the product at this price. Now the target selling price is the market driven. वो मार्केट ने एक्सेप्ट करना चाहिए. Whatever selling price I will decide, this should be accepted by the market. Means what, I should able to generate the revenue through this.
The target selling price is market driven and should encompass a realistic reflection of the competitive environment. My price should be competitive with my competitor's price. There should be no gap between my price and my competitor's price. Otherwise, I will not break the competitor's customers. I will not break the customers from my competitor. इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? By making the identification in the gap, by setting, by understanding the existing price of the similar product into the market, I need to decide the target selling price. So this is the second step. Third step is the you have to decide the production volume. Production volume यानी कितना manufacturing करना है. 1 lakh cars in 1 year, 2 lakh cars in 1 year, 3 lakh cars in 1 year. Getting this? Because see, yeah, your profit level is also fixed. Minimum margin you wanted to achieve, and by selling very less number of units, you will not decide. You will not generate much of revenue. मुझे क्या करना है? कम से कम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम सेल मुझे मिलाना है, कमाना है. इसका मतलब क्या है? आई विल नॉट जनरेट द प्रॉफिट बाय सेलिंग 10 कार्स ओनली. मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? 1 लाख टारगेट, 2 लाख टारगेट, 3 लाख टारगेट, 50,000 टारगेट. ऐसा टारगेट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट पर यूनिट के बेसिस पे है. जितना भी मैं ज्यादा सेलिंग करूंगा, जितना भी मैं ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है. If I produce only 10 units, so 10 into 10 is equal to 100 rupees profit हो जाएगा. If I produce 100 units, then 100 into 10 is equal to 1000 rupees profit हो जाएगा, because my profit is decided per unit. So to generate more and more profit, I have to produce more and more units. Try to understand this. So here, once you once you have designed the product, once we have decided which product you should produce, then we have to decide the target selling price. And once you have decided the target selling price, then you have to decide the production volume. Production volume means what? How many units you are going to manufacture and sell into the market. That also you have to fix. So establishment of target production volume is closely related to selling target selling price. कितना, अगर इतना मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस रखा तो इसमें कितना सेल हो सकता है, दैट आई हैव टू एस्टिमेट, एंड इट शुड बी वेरी क्लोज रिलेटेड टू. मींस व्हाट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लाख यूनिट्स हम लोग बनाएंगे और उसमें मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा. देन so whatever remaining unsold units you have to scrap again. So it should not happen. जितना भी मैं बनाऊंगा उतना I can able to sell into the market, उतना मैं सेल कर पाऊंगा, उतना मुझे सेलिंग का वॉल्यूम डिसाइड करना है. ओके, और वो प्रोडक्शन वॉल्यूम किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? सेलिंग प्राइस कितना है. बिकॉज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक द वेरिएशंस इन द सेलिंग प्राइस. इनिशियली क्या होगा? मेरा सेलिंग प्राइस वो ज्यादा रहेगा. जैसे जैसे प्रोडक्ट अगली वाले स्टेज पे जाएगा, तब से तैसे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्राइस डिक्रीज भी कर सकता. सेलिंग प्राइस डिक्रीज कब करूंगा? इफ आई गेट द स्कोप टू रिड्यूस द कॉस्ट. अगर मुझे स्कोप मिलता है कॉस्ट रिडक्शन का, तभी मैं सेलिंग प्राइस डिक्रीज भी कर सकता हूँ. तो प्रोडक्शन वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस हैंड इन हैंड होता है. Production volumes are important in computation of unit cost, particularly capacity related cost and fixed cost. तो ये capacity related cost and fixed cost को understanding करके मुझे production volume decide करना है. Product cost are dependent on production level over the life cycle of the product. Product cost किसके ऊपर depend है? Production level हम लोग कितने करते हैं. अगर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया तो मेरा ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग लेवल बहुत वॉल्यूम अगर लेवल बहुत कम रहेगा तो मेरा कॉस्ट ज्यादा ही रहेगा. गेटिंग दिस? जितना भी मैं वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा उतना पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगा और मेरा पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ेगा. इसलिए मुझे वो टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड करना है.
क्या क्या फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि डिजाइन फाइनल करना, दूसरा स्टेप क्या था सेलिंग प्राइस फाइनल करना, तीसरा स्टेप क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड या वॉल्यूम फाइनल करना। नेक्स्ट इज द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। अभी टारगेट प्रॉफिट मार्जिन यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट you are going to generate through this manufacturing activity। ये टोटल एक्टिविटी में से मुझे कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, दैट अगेन आई हैव टू डिसाइड द टारगेट। Since profitability is the critical for survival, the target profit margin is established for new product. Without deciding the target profit margin, you can't deliver the product, you can't manufacture the product, you can't sell the product into the market. You have to decide how much profit you wanted to generate through this activity. The target profit margin is derived from the company's long-run business plan, objective and strategy. Company का plan क्या है? For how many years, how many days company wanted to survive in this field? कंपनी के बिजनेस प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है? By understanding this, I will decide the target margin or profit margin. Each product should earn at least target profit margin. और हम लोग क्या करेंगे, ये टारगेट कौन सा भी जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कम से कम उतना तो प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहिए, वो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग डिसाइड करेंगे। So this is about the target profit margin. This is the fourth stage. Now next one is the setting. मैंने क्या किया, प्रॉफिट डिसाइड किया, सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, वॉल्यूम डिसाइड किया, अभी मुझे क्या करना है, टारगेट कॉस्ट डिसाइड करनी है। टारगेट कॉस्ट, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट? टारगेट कॉस्ट इज द रेसिडुअल थिंग, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। सो टारगेट कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन target selling price and target profit margin, and it will be also called as a allowable cost, यानी उतने में ही मुझे बिठाना है। 80,000 में मुझे टाटा नैनो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल खर्चा होना चाहिए, that is the target cost. So by understanding this target cost, by considering this cost, I will arrange my entire resources. So I will break down this target cost into small सेक्टर्स और स्मॉल हेड्स। तो ये टारगेट कॉस्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग 80,000 में मैन्युफैक्चरिंग कितना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना चाहिए, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में कितना चाहिए, 80,000 का हम लोग क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। ओके, सो दिस बाइफर्केशन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट अगर 1 लाख का है तो अकॉर्डिंगली आई कैन मेक द मैन्युफैक्चरिंग, I can make the breakdown of this target cost. अगर 80,000 का है तो 80,000 के हिसाब से करेंगे, 90,000 का है तो 90,000 के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। So setting of target cost is the difference between target selling price and target profit margin. So my margin is fixed, my selling price is fixed. So selling price minus margin is equal to your allowable cost, and this allowable cost is nothing but your target cost. Ideally the allowable cost becomes target cost for the product, और ये allowable cost उसको residual cost भी बोलते हैं और उसको target cost भी बोलते हैं। So this is the fifth step. Now next is the sixth step is computing current cost. अभी करंट कॉस्ट क्या है? सो व्हाट इज राइट नाउ करंट कॉस्ट? राइट नाउ यानी अभी प्लान स्टार्ट करने के पहले व्हाट इज द एग्जैक्ट करंट कॉस्ट, व्हाट इज द रिसेंट कॉस्ट? सो वी विल कंपेयर दिस करंट कॉस्ट विद द टारगेट कॉस्ट. So your current cost of producing the new product should be again estimated. What will be the actual cost? What will be the actual current cost of manufacturing, that to be estimated in the target costing. The estimation of current cost is based on the existing technologies, existing components, existing functions, and existing quality requirements of the new product. On the basis of these things, we will estimate the current cost of the product. Now see, the direct costs are determined by reference to the design specification, material prices, labor, processing time, and wages rate.
तो करंट कॉस्ट डिसाइड करते समय आई विल डिसाइड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल प्राइसेस, लेबर प्राइसेस एंड डायरेक्ट वेज रेट। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्ट करंट कॉस्ट। And how we are going to decide the indirect current cost on the basis of activity based costing. By using the activity based costing, I will understand the indirect cost. Now see here, your current cost is the sum of direct cost and indirect cost. By calculating direct cost and indirect cost, I can calculate the current cost of the product, and I will I can compare this current cost with the target cost. So this is the sixth step. And I think it is the last step. No. And seventh step is the setting cost reduction target. Once we have decided the target cost, and once we have decided the current cost, once we have estimated the current cost, then to set up or to get predetermine the profit level, I will set up the cost reduction target. अभी मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट का जो रिडक्शन टारगेट यहाँ पे सेट करूंगा 6-7 स्टेप में. No, cost reduction target means what? The difference between current cost and target cost indicates the cost reduction. दो कॉस्ट में, एक्चुअल कॉस्ट में और कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट टारगेट कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है, उसमें से हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कैलकुलेशन करेंगे. This amount may be divided into two constituents. First one is the target cost, means what is your reduction objectives, what is your actual reduction objective. And second one is the strategic cost. Strategic cost means what? It is the challenge in front of me, it is the challenge, it may be come into picture or may not be come into the picture. But target cost is cost reduction objective. So entire this reduction target will be classified into two components. One is the target cost and second one is the strategic cost. Target cost means anyhow I need to achieve this target, and strategic cost means what? Here I will try. टारगेट कॉस्ट में क्या होता है, हम लोग एनी हाउ, मुझे स्कोप नहीं है, मुझे उतने में ही बिठाना पड़ेगा. लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू डू दिस. So I will play the various strategies to reduce the prices or to reduce the cost. Third is the former is viewed as a being achievable, while latter acknowledges the current inherent limitations. टारगेट कॉस्ट क्या है, हमारी लिमिट में होते हैं, वी कैन डू दिस. बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट क्या है, हमारे लिमिट में हर टाइम नहीं होते हैं. वी हैव टू एडजस्ट लिटिल बिट while setting the cost reduction target. Now, after analyzing cost reduction objective, production level target cost is set, which is the difference between current cost and target cost reduction objective. By understanding this current cost of the product, by understanding the target cost, by understanding the strategic cost, I will decide the strategic cost reduction objective or strategic cost reduction target that I will set over here in seventh step. And last step is about identifying cost reduction opportunities. Here in target costing, once you have decided the product level target cost is set, a series of analytical activities. Analytical activities are the activities where you will find to reduce the cost. You will find alternatives to reduce the cost. So after a product level target cost is set, a series of analytical activities or series of analytical experiments to commence to translate the cost challenge into reality. तो कॉस्ट टारगेट, जो टारगेट कॉस्ट है उसको रियलिटी में लाने के लिए हम लोगों को वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, वेरियस एक्टिविटीज करने पड़ेंगे. दैट एक्टिविटीज वी हैव टू आइडेंटिफाई अंडर 8th step. So these activities continues from the design stage till the manufacturing of new product.
तो ये सारे एक्टिविटीज डिजाइन से स्टार्ट होके फिनिश प्रोडक्ट्स बन के फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट करने तक के सारे एक्टिविटीज आइडेंटिटी कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज में आते हैं. The total target is broken down into various components. तो हमारा जो टोटल कॉस्ट टारगेट क्या होता है, मटेरियल वाइज, लेबर वाइज, देन एक्सपेंसेस वाइज, प्रोडक्शन वाइज, देन आपका एक्टिविटी वाइज, ये ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें, ये सारी कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं. एंड टू एवरी डिपार्टमेंट, every activity, for every department, for every activity, and for every responsible person, for every responsible head, we will give the target. We will give the target. We will give small objects. We will give small targets to him, and we will ask him to achieve this target. So automatically we will set the, we will achieve the determined, predetermined cost. And in this way, these are the various steps. So these are the various steps in target costing. So just once again let's have a review about the target costing. So target costing is the new area. Whenever you wanted to launch new product, that time you need to go by target costing. Why there is need of target costing? Because product life cycle is decreasing every day. Competition is increased, expectations of the customers are changing day by day, economy is also changing day by day, standard of living of person is changing day by day. Getting this, that's why there is no scope rather than target costing. Target costing is different than traditional costing. Traditional costing में पहले मैंने खर्चा किया और फिर उसका एनालिसिस किया. इधर क्या करना है, पहले एनालिसिस करना है और एनालिसिस देख के मुझे खर्चा करना है. एनालिसिस देख के मुझे क्या करना है, एक्सपेंसेस करना है. टारगेट कॉस्टिंग पहला चीज था डिजाइन, स्पेसिफिक डिजाइन बनाना, स्पेसिफिकेशन बनाना, एंड द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन मस्ट मैच विद द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट. गेटिंग दिस. तो ये डिजाइन बनाते समय मुझे मेरा प्रोडक्ट और मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, उसमें से गैप ढूंढना है और गैप ढूंढ के मुझे क्या करना है, वो गैप फिल करके मुझे स्पेसिफिक करने के लिए मुझे स्पेसिफिकेशन बनाना है प्रोडक्ट. दूसरा स्टेप था सेलिंग प्राइस डिसाइड करना. सेलिंग प्राइस डिसाइड करते समय मुझे वॉल्यूम भी डिसाइड करना पड़ेगा. सेलिंग प्राइस डिसाइड करते समय मुझे क्या करना है, प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करना है. और माय सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू माय कॉम्पिटिटर्स प्राइस, ये होना चाहिए. उसके बाद वॉल्यूम डिसाइड करना. वॉल्यूम डिसाइड करते समय कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी की कैपेसिटी कितना है, कंपनी का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है या क्या है, ये डिसाइड करके मुझे वॉल्यूम डिसाइड करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप क्या थी, प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना. हाउ मच प्रॉफिट यू वांटेड टू, बिकॉज प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ सर्वाइवल. टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव फील्ड यू नीड टू जनरेट द प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट का मार्जिन डिसाइड करना पड़ेगा. सो दिस प्रॉफिट मार्जिन यू हैव टू डिसाइड. दिस प्रॉफिट मार्जिन आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के स्ट्रेटेजी, कंपनी के बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड रहे. एंड दिस मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन यू हैव टू सेट एंड यू हैव टू अचीव इट. नेक्स्ट वन इज द, once you have decided the profit margin, then you have to decide the setting of your cost. अगर इतना प्रॉफिट बनाना है तो ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन करके जो प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके जो बचता है वो होता है मेरा टारगेट कॉस्ट. So that target cost I have to decide. And how you can decide the target cost? So target cost will be selling price minus target profit. तो ये मेरा target cost रह जाएगा. And this target cost I will break down here. So here target cost I will decide, and by deciding the target cost I will compare with current market cost. Current market cost क्या है, टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट, फंक्शनैलिटी और क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वी विल एस्टिमेट द करंट मार्केट प्राइस. तो करंट मार्केट प्राइस में डायरेक्ट कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है. देन वंस वी विल एस्टिमेट द करंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी विल डिसाइड द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट. एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपीज है, टारगेट कॉस्ट 100 रुपीज. टारगेट कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज है.
टारगेट कॉस्ट मेरा 90 रुपीज है, तो आई विल डिसाइड देन कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव। अभी ये 90 रुपीज अचीव करने के लिए कितना बड़ा टारगेट मेरे सामने है, हाउ मच इज द गैप बिटवीन योर टारगेट कॉस्ट एंड करंट कॉस्ट। 50 रुपीज का है, 10 रुपीज का है, 5 रुपीज का है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड द टारगेट। एक्चुअल कॉस्ट में और टारगेट कॉस्ट में गैप कितना है, गेटिंग दिस टू फुलफिल दिस गैप I have to decide the targets, I have to decide the strategies। और ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। ये कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट 100 है और मेरा टारगेट कॉस्ट 50 है, तो 50 रुपीज का गैप है। वो 50 रुपीज का गैप भरने के लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करने पड़ेंगे, एक्टिविटीज डिसाइड करने पड़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। So this was something about steps involved in the, hello sir, हाँ sir, okay, ठीक है sir, चालेल चालेल, okay sir, okay, yeah, yes। So we have just decided the introduction, we have just studied about the introduction of target costing, then importance of target costing and stages in the target costing that we had studied in this lecture. Next lecture we will go for the advantages of the target costing, and we have left with only one costing, that is the Kaizen. So maybe tomorrow we will finish this unit if possible. Okay, let's stop here. Thank you so much.